about this theme. Okay, so I'm not making it as a page to page, word to word summary. This book does not need that. What it needs is some inspiration for you to embrace this topic in your own life. Okay, and that's the kind of inspiration I'm aspiring to achieve in my session today for the next 30-40 minutes. And towards the end, we'll touch this aspect again, whether I was able to inspire you enough, whether I was successful or not. So, as you can see, the title of this book is Vitamin N. The author is Richard Louv, and the author will just in a moment we'll understand more about their work. Has incredibly written about this theme of nature and its importance in the lives, especially of children as well as adults. And even, there is a chapter here in this book that says if you're a grandparent, then how can you embrace nature, how can you connect with your grandchildren through nature. So if you have children at home, I think great reminder, great anchor point for you, great inspiration and tips for you to carry home today. It's a complete prescription for connecting with nature. There are over 500 activities listed in this book. उसमें से एटलीस्ट 5 या 10 भी अगर आप कर सकेंगे पिकअप एंड embrace कर पाए, I think you have invited a beautiful and more grounded life for yourself and your child and your family. There are plenty of informational websites, but I'd like to say they're mostly US based. So many of them might not actually be relevant for us as such, but that can definitely give us anchor points as to how can we search those areas or aspects in our own country or in our own town or state. So again, it's equally helpful. This book did not add anything new to my life. It returned back something that was old and that already belonged in my life. And it will do that to all of you. I hope you're with me so far and we can move ahead. So, this is a very beautiful personal share that I would like to move towards. As you can see, some kind of muddy hut, bamboo hut, lush trees you are able to see here on this graphic. And I want to share that this has been the kind of life that I led for many years in my early childhood, at least like until I was 6 years of age. Right. So I was born in a very small town and it's named Tezpur. It's in Assam. And the visuals that were a part of my life every single day were, all of these big, large leaves, huge bamboo trees, um, all of these small small huts were all around my home and my neighborhood was so green. You can imagine any place in Assam and northeast of India could be extremely green. And go back to the 80s and 90s, you can imagine that life was so much slower back then. And I remember as a little girl, there were moments when I would run after the ducks or little, chickens and hen, and my mother had to, sometime go fetch me. But life was so slow and safe that parents were not scared at that time if the child is outdoors, which was incredible. Today we cannot imagine that same kind of assurance when our children move out of their homes. And this is a point that the author has acknowledged very gracefully. So until 6 years of age, this was a part of my life. And although it's been so many years since I have moved out of that space, but in some corner of my heart, this feeling of such proximity to nature, this feeling of wilderness, and just being out there in um, being able to explore, just run away and find more huts. And even the people out there who were living were very kind, gentle, loving and safe. And you could and they knew that I am, the daughter of this house, and they would safely take me back or just keep me with them until one of my family members would come to fetch me. So, just a little bit of nostalgia I wanted to bring here. And I know this might sound nice, this might sound very sweet and special. And you,
also may have a story about your childhood where there was much greater proximity to nature than you have today. You might acknowledge this, that back in your childhood days, you may have been closer to nature, right? So, from this background, transitioning to at the age of 6 or 7, at the age of 6, we moved to Calcutta, and straight away, straight up from a small grounded house on the ground floor, where just another floor above was there, to more towers, more floors, apartments, and closed boxes homes, and not so many people to talk to. That kind of felt a little off. I didn't enjoy that for some time, but until my dad got me some musical instruments and I got more immersed into that. But there was a part that missed this openness of nature at that time. And obviously life took over, school took over, and we forgot about it. And again, this was rekindled when I was sent to a boarding school in a countryside, very, very remote, out from the hustle bustle of city life. I have spent, I would say, about at least 7 8 years of my early adolescent life in lush green sprawling campus, where again there were peacocks and so many daffodils all around, and huge proximity to nature always. And I really loved that. I mean, it felt so incredible, so beautiful. You could just lie down on the ground and let the sun rays fall on your face. I really loved that. Then again, I came back to my parental place, and then college. All of that was extremely, I would say, mechanical, moving in metros and trains and small campuses, small college buildings, and there was no contact with nature, I would say, as much. All my 20s were had limited proximity to nature. But then again, in my early 30s and mid 30s onwards, I would say, again I started becoming very conscious, very intentional, especially perhaps after having your own child. You actually feel that your child should get more of nature and less of screen. So I was more actively engaging her in sensory experiences with nature, as well as everyone in my family here, my partner and my extended family members also share similar interests like that, which is why we are able to incorporate so much of nature in our life today. That feels like a blessing. But again, I read a quotation here in this book, and that said, how much of nature, how much dosage of this prescription of nature is enough for you? And it said, if you are spending none, then some will do, and if you're spending some, then more will do, something like that. So if none, then please have some. If you have some, then please have more of that. So there's no tangible statistical figure that you might want to attach yourself to, but just start including, embracing, welcoming nature in your life in whatever way you can. And this book lists so many ways that there won't be any single person who won't resonate with at least one of those ways. I mean, when you read it, you might feel इनमें से, यार ये तो मैं ट्राई करता हूँ, यार ये तो बहुत मजा आएगा. And I would like to acknowledge that Sanjay ji, Reti ma'am, Rumit sir, Neha ji, Shiv Singh sir, all of you, early mornings when you send us those graphics of being out there in the woods, I would say it's extremely, extremely inspiring, truly. And I know, and you will validate, that the image does no justice to your actual lived experience over there, right? Um, However, I mean, you're all doing a great job by bringing that aspect of nature in your lives and also sharing a bit of that with us. So why am I inviting you to this book? Because I am gradually learning, and it's no blame to any single person as such, but it's an acknowledged reality, and all of you will agree we are actually living extremely overstimulated lives. Our life has too much of sensory stimulation, probably 24/7. We are sleeping with our phones inside our minds. Even tangibly, it has been outside of us, or outside of our room. But the
mental imprints or impressions that we have carried all through the day are very much there with us. Our minds are extremely busy, bodies are very tired. As a therapist, I really acknowledge that both adults as well as children majorly miss being regulated. So I would like to dwell a bit on this. You might want to ask, what do you mean by regulation? That and by that, I would just like to say that our nervous system takes extremely good care of our mental and emotional well-being and performs a lot of functions. But you may have experienced at a time of distress, at a time of something which is not going well for you, at a time when you're feeling burned out or you had a fight with someone, you may feel uneasy in your body. That is something that definitely happens. If you come to know that somebody is going to call you with whom you don't have a great rapport, before that actual event, you will already start feeling slightly dysregulated. Okay, so that's what we mean by a lack of regulation or feeling dysregulated. It also means that when children or adults today are faced with some kind of turbulence or challenge, it's more difficult for us to come back to our grounding self. It's more difficult for us to come back to a more calmer sense of nervous system, or we really find it difficult these days. You might have experienced it in your own life. Even if you are a very calm person by nature, I consider myself as a very calm person by default, but I would like to acknowledge that there are events in my life that make me feel terribly dysregulated at times. And the one good thing that today I can acknowledge is that I do come to know that this is what is happening to me, and I'm able to word it. And sometimes I just sit down. I will also say, I'm not able to cure it in 24 hours or 2 days. It might take longer time. I'm no magician. And you can't say that a therapist will never feel dysregulated. You can't say doctors ko bhi pet dukhega. Even lawyers will face some legal challenges, right? So if, similarly, even therapists will face emotional and mental overload sometimes. That's very, very human. So we as a tribe are more dysregulated today than we may have been earlier, because we have extreme access to too much of sensory stimulation. And we are not blaming anyone, we're not even blaming technology or the way times are changing. We're just acknowledging that this is how life is today, right? So vitamin N here, N means nature, vitamin nature, that's the term the author has used in this book. It sounds very fancy, it sounds very beautiful, and um, I just love this title and the phrase. It helps us bridge our slower childhood memories. Many of you will acknowledge that your childhood was very, very slow. And again, we are not labeling or judging that children today are not able to have that kind of childhood, because it's not entirely these children's fault. It is the time and era they are born in. Okay, our forefathers might have felt the same kind of judgment about us. So this is exactly how life keeps working, ahead. Our children might feel that their children ahead may be leading more hyper, stimulated lives. This is how it goes. So again, bringing ourselves in proximity to nature might help us bridge that gap of very, very fast life in adulthood. A lot of us are millennials here, I can see. And our childhood was, late 80s to all the 90s. So again, there can be a bridge towards that part of our life. We don't need to exactly go back to that life, because we are leading here in present today, but we might want to embrace some good parts of life over there. And I'm reading a lot around themes and topics like that. I would encourage you also to start reading around that. There's this concept which is a cool concept of the 2026. It's called analog living. And analog living means more and more millennials are intentionally choosing to cut down their connection and contact with very mechanized formats of living that we have been post pandemic, especially even to the extent of actually going to that kirana wali dukan and purchasing doodh and bread, and not going blinkit all the way.
right? So that's also part of analog living. So going to the actual shopkeeper and buying vegetables. So and we really need that, no matter how comfortable and easier our life becomes with door to door delivery. But we are missing our connection with that more tangible part of our life. आप जब वो सब्जी को स्पर्श करते हो अपने हाथ से, when you touch that, when you actually chop it or cut it with your own hands, it's not just a task of cooking that you are engaging yourself in. It's a very, very grounding activity for you. So a lot of analog tasks that we have lost touch today have been very grounding activities. It is very meditative, yes. And one of the most analog activities that we can do with and we are already doing, is reading actual paper books more than digital books. We're not against reading of digital books, but actually holding this book in our hand gives you a sense of groundedness. Okay, so embracing more analog living is very, very synchronous or synonymous to invoking or inviting nature in our life. And small mindful connections with nature, more analog living that I already shared, can quietly shape healthier, more intentional living for us and our children. Intentional living, also, I just love to pause and state, often our life has been going on autopilot mode. Things are just happening, you know. We have created systems. Morning में इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मेरा ऑफिस होता है, इतने बजे I need to drop my kid to school. Lot of these have become habits, and it might be serving very well for us, but constant autopilot living prevents us from actually being in that present moment, or savoring that actual experience. सो ऑटो पायलट से थोड़ा थोड़ा इंटेंशनल आप चूज करें आपके लाइफ के आउटकम्स, या आप चूज करें आपके रिएक्शंस टू द सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस, रादर देन यू बीइंग रिएक्टिव. आई सेड संजय जी मैंने आपसे लड़ाई करी और आप तुरंत फ्लेयर अप हो गए और आपने भी मुझे सुना दिया. ये रिएक्टिव लिविंग हुई, ये ऑटो पायलट मोड से आया करता है. ऑब्वियसली आप जैसे प्यारे इंसान से मेरे कोई लड़ाई नहीं हो सकेगी, बट स्टिल थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू use your name as an example. Now let's come to this amazing author, and he has some podcasts and talks on YouTube, and I would really love you to go and check his work. He has a website also with his name. If you want, I will copy that, paste that on the chat box also, that you, and you could go back after this session to explore that part. This author actually sounds very, very graceful when he talks about the concepts that are close to him. Let's just quickly understand a bit about him. He is an American author and journalist, and mostly writes nonfiction, especially on themes related to nature. His work um, is concerned with linking reduced exposure to nature. He has given an amazing term to that. We'll come to that term just ahead. And he said that limited exposure to nature leads to issues like attention difficulties, even obesity, lowered creativity, and depression. And he is doing incredible work in this area, and he also credits and acknowledges and writes and congratulates all the people who are working in this field. He has blog posts, and he voraciously acknowledges the work of all of these other people. Very interesting, right? It was I got access to this author and his work last year during one of the readathons, and I was just trying to include some books outside my areas of interest. And The Last Child in the Woods was the first book that I read by this author. And after that, I said, let me try this one as well. And both of those books did not disappoint me at all. Okay. So drawing on research across psychology, education, ecology, he has kicked off kicked off a global movement that helps reconnect children and adults with nature. And he is a regular speaker, and his themes are around planetary well-being, so a more kinship kind of a worldview, and how as a community we can savor and embrace nature in our lives. And he says it's not just a personal choice anymore, it's a conscious community responsibility. We owe it to ourselves, our generation ahead of us, and the whole planet that we are living to. So there's a sense of urgency in his approach. Okay.
So how the nature is a great source of nourishment here. Just a few quick benefits I would like to add here, but as we read more and more, you will find so many other benefits outside of this as well. So, nature is an elixir in the age of NDD. I will come to NDD in just a moment. I'm creating an element of surprise here. It can be responsible to reduction of attention deficit hyperactivity disorder. Many children, many younger children are very, very prone to ADHD in today's times due to a lot of sensory stimulation and obviously smartphones and tabs and all of that. And there are actual researchers that say that exposure to nature helps reduce the symptoms of ADHD and other such kind of symptoms that young children and even adults experience. It can serve as a buffer against depression and anxiety, prevents or reduces myopia. You will understand soon how. You know, in day to day life, our vision is focused on this small screen, right? My laptop screen is at least still bigger, right? But majority of the time of my day will be spent on this screen. ये जो एरिया है मेरी आंखें यहाँ तक सीमित हो जाती है through my day, right? And especially even if late night binging hours, if we are engaging ourselves, ये हमारा स्क्रीन है. तो हम अपनी आंखों को वो वास्ट एक्सपांस का एक्सपोजर नहीं दे पाते थ्रू आउट आर डे. And it is something our eyes have been designed for and they actually deserve. So when you move outdoors in a forest kind of a space or in a completely nature space, your eyes for the first time are able to perceive and look at such a panoramic view, such a diverse angle of view. So this might help in your eye condition. Also obviously helps obesity or any kind of health issues because nature might encourage more movement in us, boosting immune system, improving social bonding. The author has listed a lot of strategies where you can have nature activities with your neighborhood, your family members, रिश्तेदारों को बुला करके आप प्लान कर सकते हैं बहुत amazing interesting nature activities. It also helps strengthen conservation ethics in us, like we feel more mindful, we feel more responsible towards actual nature that is around us. It stimulates creativity and sense of being or feeling fully alive, and also I think a sense of wonder in us. So also I'd like to acknowledge here because I lived in Assam for some time, and then also we went to Rajasthan in our village to our dadi and nani's house very often during our childhood. And I remember that आउट देयर एक्सपीरियंसिंग नेचर ऑल्सो वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. बट वहाँ राजस्थान में गाँव में ना हम मिट्टी में खेलते थे, वो हाथों से लड्डू बनाते थे मिट्टी के. आई डोंट नो इफ सम ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट और नॉट, एंड इट माइट साउंड फनी टू लॉट ऑफ यू, बट आई हैव रियली फेल्ट, आई यूज्ड टू फील कि यार ये हमारे ज़माने में होता था कि शायद आजकल के बच्चों को तो नहीं मज़ा आएगा. बट यू ब्रिंग योर किड्स टू दैट स्पेस, हर बच्चे को मज़ा आता है. It's not just a factor कि आज के ज़माने के बच्चे नहीं करते resonate इस चीज़ से. We have carried our children from this generation to proximity to our village. तो वहाँ पे वो जो buffaloes, cows, goats, जो भी cattle होते हैं, हर गाँव के हर घर में cattle हुआ करता है, वहाँ पे खेत होते हैं. And irrespective of what era or generation you are a part of, you will enjoy that kind of nature, that kind of sensory stimulation that nature gives you. But however, the culture might differ. So, you know, children in Kerala also will enjoy playing with mud, but obviously some surroundings and settings will be different, right? So, nature here in this book, as we learn, is not just a spectator sport. आप बस जा करके पार्क में बैठ गए बेंच पे, ऐसा नहीं है. You are actively engaging with nature, and also the author lists a lot of conservation projects that people in groups can be a part of, like, you know, butterflies के लिए habitats, actual habitats create करना, या migratory birds के route change हो जाते हैं because of some weather changes, तो आप actually leverage कर पाते हो. अगर as a entire group आप उस area में interested होते हो, there must be some nature clubs in your city, I'm sure. I have some amazing nature clubs in my city, and my family is a part of that, and we really love actively engaging in their activities. बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है.
and we'll come to some of the techniques and strategies that we here try to embrace. So नेचर में आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज ही नहीं करनी कि जाके झूला झूल रहे हैं या ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं. यू माइट ऑल्सो वांट टू let your children wander in independent play. So the author has टाइम एंड अगेन टॉक्ड अबाउट फ्री प्ले, कि आप बच्चे को कुछ बता नहीं रहे हो रूल्स कि आपको ऐसे करना है, ऐसे खेलना है, क्रिकेट खेलना है, ये करना है, जस्ट फ्री वॉन्डरिंग आउट देयर, जो कि आई थिंक अर्लियर काफी हुआ करता था. छोटे बच्चे बहुत करते थे ऐसा हमारे टाइम में या हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी. बट टुडे प्ले हैज बिकम मोर सिस्टमैटिक, मोर रूल बेस्ड आई फील. सो फ्री प्ले थोड़ा सा मिसिंग है आज के टाइम में. But I would also want to share here that this is a book not of shoulds. यहाँ पे आपको कुछ भी should नहीं कहेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए या करना पड़ेगा. ये आपको possibilities बताएंगे कि आप ऐसा कर सकते हो. Okay? I'm sorry. Yeah. So there are several chapters and themes out here in the book. I'm just picking up a few of those. Pramila ji, I hope you are safe as you're listening to me walking here. I hope you're not amidst cars, etc. I hope आप बहुत secure जगह पे हो, boundaries के साथ. Okay, good. So starting from day one, infant जब आपके जीवन में आता है, आपके घर में अगर है, and I know that Namaste Sher Singh, sir, happy to see you. So we do protect younger children from, हवा नहीं लग जाए, ये सब नहीं हो जाए, which is all perfect. We also follow those kind of protocols. But as soon as possible, you are able to start giving your baby the gift of nature. थोड़ा सा धूप बच्चे को मिले, थोड़ा सा नेचुरल एक्सपोजर उसको मिलना शुरू हो. नेचर टाइम कैन ऑल्सो बी हीलिंग फॉर न्यू पेरेंट्स. सो पेरेंट्स हु कैन टेक देयर किड्स आउट on a stroll, it's not just good for the baby, it's good for the parent as well. Also they can create a neighbor nature strolling group. The author has suggested कि और भी पेरेंट्स अगर हैं तो आप इकट्ठे कंबाइन होकर के अपने स्ट्रॉलर्स में जो बेबीज हैं उनको आप कैरी कर सकते हैं. यू कैन बॉन्ड, यू कैन टॉक, you can have fun together. Also, the author has given this example that a lot of times in the mall or in hotels, restaurants, when we are seated to dine, and a younger child might feel very dysregulated again, they might not feel at ease, they are crying. So the author says, take the child outside, bahar fresh air mein le jao aap, stars या sky है या ट्रीज या फिशेस, एक्वेरियम्स भी कुछ भी है, वो आप बच्चे को एक्सपोज कराते हो तो वो काफी वो बच्चा बहुत काम हो जाता है. बट टू द कॉन्ट्ररी, मेनी टाइम्स व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज हम फोन ऑन करके बच्चे को पकड़ा देते हैं, यूट्यूब कोकोमेलन कुछ भी वीडियो दिखाते हैं, होपिंग दैट इट्स calming the child. It might give temporary relief, but it is actually adding to the problem in the long run, right? Again, explore the universe together. चटाई, चादर, कंबल कुछ भी आप कैरी करिए, और आसपास आपके अगर कोई गार्डन है या मतलब सेफ और अच्छा क्लीन स्पेस हो, बिछा करके लाई डाउन ओवर देयर. अभी तो सर्दियां हैं, यू कैन इजीली explore this experience, and lie down over a blanket on the grass, look up at the sky, carry some eatables, because if you're going with children you might need some eatables. I have done this with my little one along with my friends, and she still continues to carry that experience or talks about it with great joy. I don't remember she talking about cartoons or films as much as these kind of experiences, which tells that although watching something might give us some kind of hedonic pleasure at that moment, temporary pleasure at that moment, but थोड़ा lasting जो joy है वो हमें nature की proximity में मिलता है काफी सारा. Okay. Again, build a nature vocabulary, play nature games with kids. अब हम एटलस खेलते हैं हम, जैसे कि कंट्री के नाम अल्फाबेट्स पे ए से आया, फिर वो बी पे एंड हुआ तो आप बी से बोलिए, वैसे आप नेचर की अंताक्षरी या एटलस खेल सकते हैं. आप टॉडलर के साथ है तो ऑलवेज बी ओपन कि आपको कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है. कैरी एक्स्ट्रा स्टफ, कैरी एक्स्ट्रा टॉवल्स, pieces of clothing, etc. So don't take those kind of stops or restrictions as frustrations. Be open towards कि ये होगा आप छोटे बच्चे के साथ अगर जा रहे हैं. Also, watch your child be fascinated by a blade of grass, pebble, or butterflies. I'm sure you have definitely seen that kind of expression in a child's eyes. आपके आसपास जो भी बच्चा होगा तो आपने देखा होगा. This starts, the first chapter actually starts with this beautiful quotation by Rachel Carson. Rachel Carson is again a pioneer in the work related to nature.
And this quote goes like, if a child is to keep alive his inborn sense of wonder, he needs the companionship of at least one adult who can share it, rediscover it with him, the joy, excitement, and mystery of the world we live in. Which means हम एज अडल्ट्स, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि हम हमारे बच्चों के अंदर नेचर के टूवर्ड्स लव इग्नाइट कर सकें. एंड द ऑथर कीप्स टेलिंग दिस टाइम एंड अगेन कि ये हमें करना चाहिए. मतलब it would be a crime, you know, if we leave this world without instilling that kind of love in our younger generations. And this was a very new term for me. I had never heard about this. It's called friluftsliv. Pardon my pronunciation. It's a Norwegian term and it says free air life, which means एक मिनिमम डेली या मिनिमम वीकली नेचर टाइम आप अपने आप को जॉट डाउन करके रखें. जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स पर डे अगर हमने सेट किया हुआ होगा, वैसे ही योर एक्सपोजर टू नेचर का आवर्स या मिनट्स या यू नो दैट इंटेंसिटी भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. So again we are coming to lots of, I mean there are lots of endless strategies and ways where in which we can embrace nature. मैं वो सारा list नहीं कर सकती, otherwise we won't be able to complete on time, but I've just added a few of those and you can take some inspiration. Schedule nature on your calendar. हम कैलेंडर में हमारे टॉक सेशन, मीटिंग्स, किसी के घर जाना है, कोई भी सेलिब्रेशन है, वो सब हम प्लॉट करते हैं. वैसे ही आप पहले से ही आपका मंथली या वीकली नेचर टाइम भी स्केड्यूल कर लें कैलेंडर पे. देन यू माइट बी मोर लाइकली टू डू दैट. कम्यूट टाइम में अगर आप कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्राइव पे हैं, you might find, I'm sorry, some beautiful spot which was unexpected. You were not actually intending to stop at that spot, but you found it accidentally. The author says, stop there and just be there, experience that moment. I actually experienced that on Jaipur to Delhi expressway this time when I was coming to from my parents' place. And it was so magnanimous that I can't actually put into words. Highway पर ही दूर से एक पहाड़ जैसा लग रहा था, and it was very very green and sky. लग रहा था जैसे कि वाटर कलर्स किए हैं परमात्मा ने, मगर परमात्मा ने एक्चुअली असली रंग भरे हैं प्रकृति के ही द्वारा. और वो मोमेंट में जस्ट होना बहुत पीसफुली, और वो अर्ज नहीं होनी कि हमें ये कैप्चर करना है, हमें कहीं पोस्ट करना है. जस्ट उस मोमेंट में हो जाना बहुत अमेजिंगली ग्राउंडेड था, एक्सपीरियंस था हमारे लिए. एंड आई वुड लाइक टू से कि वो यहाँ सिटी लाइफ में नहीं मिलता, हमें पॉसिबल ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता. तो ऐसे कभी आप जब बाहर कहीं जाते हैं और आपको मिलता है उस तरह का मोमेंट, सो ऑब्वियसली कैप्चर इट बिकॉज यू माइट वांट टू शेयर इट विद योर लव्ड वंस, व्हिच इज वंडरफुल. बट लेट इट नॉट बी रिड्यूस्ड टू दैट मियर एक्ट ऑफ कैप्चरिंग. कैप्चर कर लेने के पहले या बाद आप उसको जरूर अपने भीतर भर लें, उस अनुभव को एज मच एज पॉसिबल, because that nature vitamin is nourishing you. Okay, also this is such a great idea. Make outdoor coupon books. अगर बच्चे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह की एक्टिविटीज करना, तो कूपन्स यानी कि टोकन्स हो गए कि हम यूजुअली हो सकता है कि मॉल में जाएंगे, बेटा चलो ये मूवी देखेंगे हम, वैसे ही आप अपने नेचर कूपन के पेजेस बना के रख सकते हैं जिसमें लिखें कि हम ट्री क्लाइंबिंग चलेंगे, विल गो स्टार गेजिंग, विल डू दिस एक्टिविटी, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी. और कभी कभी उसको रिडीम कर लें हम आपस में. एंड द ऑथर सेज, नॉट जस्ट विद किड्स, अपने रिश्तेदार, आपके छोटे भाई बहन, उनकी फैमिलीज, उन सबके बीच में ये वाली प्रैक्टिस आप शुरू करिए. And they might soon start resonating with you, or this inspiration might be infectious for them as well. Vacations and staycations हम करते ही हैं, but also try visiting national parks, bird sanctuaries and all of those places. They are very very nourishing. Also make a family park pass. आपके आसपास कोई पार्क है अगर जो पेड है, तो उसका पास बनवा लीजिए, and because you are paid for it you're more likely to use it. So opt for something like that and join a nature's club. I have joined one and I would say it's वेरी इंटरेस्टिंग. मानसून के टाइम में वो ना जुगनू देखने वाली एक्टिविटीज करते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, कॉन्स्टलेशंस वॉचिंग, इस तरह की चीजें प्लान करते हैं, बहुत मजा आता है. ऑल्सो ऑब्वियसली इफ यू सम ऑफ योर फ्रेंड्स हैव ग्रेट आउटडोर स्पेसेस, यू कैन प्लान बैकयार्ड पिकनिक, द ओल्ड स्कूल, और अ टी पार्टी देयर. कैंपिंग बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता है,
ये आपको पता होगा। ऑल्सो मेक अ कंपोस्ट बिन एट योर प्लेस, वी ट्राइड डूइंग दिस। सो वहाँ पे जो भी वेट वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेट करके कंपोस्ट में डालते, थोड़ा कम्बरसम होता है बट काफ़ी फुलफिलिंग, यू नो, व्हेन योर ओन कंपोस्ट is being used in your garden, you really feel very, very, I mean, that's a great usage of all the vegetables that you had used earlier. Head out to harvest if there are some kind of events like harvesting actual fruits and vegetables in your city. या आपके शहर में नहीं मिल रहा, आपके गांव में डेफिनेटली होगा, तो यू नो वेन एवर यू प्लान विजिट्स टू योर विलेज, तो अपने बच्चों को वहां पे जरूर लेके जाएं कि अभी खेती का टाइम है, हार्वेस्ट सीजन चल रहा है, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर. वी डोंट गेट टू डू दिस ऑफ्टन, बट समटाइम्स चौमासे में हम गए हुए हैं, अब हमारे गांव एंड माई चाचा, लाइक वन ऑफ माई चाचाज हैज अ लॉट ऑफ यू नो वर्क एज किसान. सो वो वहां पर हम बैठ करके एक्चुअली में हमने ना तरबूज तोड़े हैं, और ऑल दोज काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो वहाँ पे वो ग्रो करते हैं. दैट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. और गाँव में मैं देखा करती थी कि ना एक्चुअली वो तरबूज को चाकू से नहीं स्लाइस कर रहे. तरबूज, आई होप यू नो, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, वो देसी वाटरमेलन है विदाउट एनी केमिकल्स, और वो बस हल्का सा पानी से वॉश किया और चाचा अपने हाथ से उसको तोड़ के टू पार्ट्स करके और फिर पकड़ा देते कि ये लो खाओ बबुड़ा. एंड दैट रॉनेस ऑफ दैट एक्सपीरियंस मेड इट सो एनरिचिंग. बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लगता है, बहुत मज़ा आता है. या शकरकंदी वहीं पे फील्ड्स में बैठ करके फायर में उसको वो रोस्ट करके खा रहे हैं. दोज़ काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आर क्वाइट रेयर दीज़ डेज़. Also in cities, they are charged exorbitantly. But if you have access to your village, if you are still connected to some native part of your, you know, extended family members, try reconnecting if possible, and see how that goes for you. Also make indoor gardens. That is, I think, very easily doable. Let's take inspiration from Reti ma'am. She has a very rich, beautiful garden of her own. Also, this is amazing. We do this very, very often, and I would say it's never failed us, my dear friends. So any family parties or celebrations, to the extent of children birthday parties, etc., so we try not to do that indoors. And obviously, luckily for us, our birthday parties fall in a weather or season where we are able to do outdoors. I do acknowledge कि summers में अगर होगा तो नहीं होगा outdoor possible, या rains में होगा तो आप नहीं कर पाएंगे. So if your birthday or your child's or any kind of occasion falls in a season where you are able to uh, include some kind of outdoor activity or access, please try doing that. It's so much fun, and all the other kids really love that, because it's like वो एक बर्थडे पार्टी होती है जब उन्हें पता होता है कि हाँ, वो ना ट्री क्लाइंब करेंगे, बाहर नेचर में जाएँगे और बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे. ऑल्सो इफ यू वांट टू गिफ्ट समवन, गिफ्ट बुक्स that have stories about outdoor adventures, like the Jungle Book, Mowgli stories, or things like that. And also you can gift gardening kits or you know seeds, etc., to people who you feel might appreciate that kind of gift. ऑल्सो एंगेज इन नेचर आर्ट. तो कई बार बच्चों को बाहर ले गए और ऑटम के सीजन में या कोई सीजन में लीव्स वगैरह उठा के लेकर आए और उसी से पेंट कर रहे हैं या कुछ आर्ट बना रहे हैं घर पे. चिल्ड्रन एंजॉय दैट एक्टिविटी अ लॉट. The author also says some pointers that can help counteract sensory dysfunction, as in सेंसरी डिस्फंक्शन मतलब कि हम सेंस ऑर्गन से या बॉडी से हम काफ़ी डिसरेगुलेटेड जब फील करते हैं, तो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट कैन हेल्प चिल्ड्रन अ लॉट. बच्चों में सेंसरी डिस्फंक्शन काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो प्लेइंग इन मडी पडल्स, उनकी एनर्जी वहाँ पे चैनलाइज हो पाती है बहुत अच्छे तरीके से. क्लाइंबिंग ट्रीज, लिसनिंग टू बर्ड्स, आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्टिविटी. एंड हम करते हैं ट्राई ऐसा करने का. The owner of the nature society here that we are a member of often says that a lot of us have these days turned tree blind. And he says that tree blindness actually एक concept है कि हमें पेड़ नजर नहीं आते. मतलब पेड़ होते तो हैं, मगर क्योंकि हम इतने स्क्रीन एक्सपोजर में हैं कि हमें उनका आभास नहीं होता कि वो हमारे आसपास है. That really stuck with me. Also roll down grassy hills. अगर आप गार्डन में या कहीं पे हो और
ऐसा कपड़ा पहने हुए हो जो थोड़ा गंदा भी हो जाए और आपको चलेगा, तो थोड़ा-सा रोल डाउन करते हैं। चिल्ड्रन एन्जॉय दैट एक्टिविटी अ लॉट। Barefoot explorations is extremely grounding. In fact, there's a point here that will come कि कभी भी अगर आप थोड़े कम ग्राउंडेड फ़ील कर रहे हैं या आप बहुत ही अनईज़ी फ़ील कर रहे हैं, आप नंगे पैर यदि घास पे या धरती पे एक्चुअली चल पाएँ, जो ग्राउंड फ्लोर है, तो आपको काफ़ी कामनेस फ़ील होती है। ऑल्सो प्रैक्टिस फोकस्ड हियरिंग। कई बार और हमें बहुत हैबिट होती है कि हम बाहर आउटडोर्स जा रहे हैं, हमने कोई पॉडकास्ट चला दिया या कुछ कुछ तो सुनेंगे, बिकॉज हम ना हाइपर प्रोडक्टिविटी में चले जाते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट आई लर्न। पहले मेरी भी टेंडेंसी होती थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो आई यूज टू लिसन टू माई ओन म्यूजिक कॉम्पोजिशंस कि वहाँ पे आइडिया हो जाए, मेरा टाइम यूज हो जाए उस तरीके से। बट आई आई एक्चुअली लर्न कि असल में वो सारे साउंड्स को बंद करके उस मोमेंट के साउंड को सुनना भी काफ़ी कामिंग और बहुत ही नरिशिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? ऑल्सो यूज़ द ओल्ड स्कूल कंपास एंड मैप। हमारे पास आज गूगल मैप ये सब होते हैं, यू विल बी मिस्ड। बट ओल्ड स्कूल मैप जो होते हैं ना, कागज़, वो बच्चे को पेपर मैप पकड़ा के उस उन्हें बोलें कि आप एक्सप्लोर करिए ये, वो बहुत एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो बी अ साउंड कैचर, आवाज़ों को पहचानिए, आवाज़ों को सुनिए। आई हैव लर्न दिस, ये ओशो बहुत कहा करते थे एक्चुअली, और ये वियर्ड लग सकता है लेकिन ओशो कहा करते थे कि हग अ ट्री। और इस तरह के आप पाएँगे कि कई संतों की बातें आप देखेंगे तो वो कोई सम प्रॉक्सिमिटी टू नेचर हमेशा उनके थीम्स में हुआ करता है। और आई पर्सनली ट्राइड डूइंग दिस एंड दिस I can't explain, but this feels very grounding, you know, when you actually go out and hug a tree. It's, I mean, it's not asking anything from you, it's not taking anything from you, but that act in itself is very, very calming and grounding. Yes, yes, of course. Nowadays, a lot of people realize that how nourishing and important this experience can be for us. Also, एनिमल के ऑर्केस्ट्रा का कॉन्सर्ट सुनिए, मतलब कि म्यूजिक या फोन की आवाज ना सुन करके एक्चुअल जो मंकीज का साउंड है आसपास या बर्ड्स के साउंड्स है उस उनको सुनिए आप, तो आप थोड़े शांत हो पाएँगे फिर, और आप आपको वो इंटेलेक्चुअलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर हम हमारे सारे एक्सपीरियंसेस को समहाउ एक्सप्लेन करके समझना चाहते हैं। दे शुड मेक सेंस टू अस। बट आई एम रियली लर्निंग एज़ आई एम studying and exploring about analog living, not all experiences in our life need to be processed cognitively, कि हम उसको सिर्फ़ अपने मन से समझें तभी हम उसे अप्लाई कर सकें। कई चीज़ें हमें उतनी सूक्ष्म ना भी नज़र आए, वो ग्रॉस एक्टिविटी भी हो, वो भी हमें काफ़ी नरिशिंग साउंड कर सकती है, एंड वी नीड टू एम्ब्रेस और इंक्लूड दोज़ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ऑल्सो क्रिएट आर्ट विथ फाउंड नेचर, नेचर के इंक्स एंड कलर्स यूज़ करिए। व्हेन आई वाज़ वेरी, वेरी स्मॉल, आई थिंक शिउली के फूल हुआ करते हैं कलकत्ता में सरस्वती पूजा के टाइम में। शिउली वाज़ very, very small white flowers with orange stems, and it has a very mild sweet fragrance। और उसको पानी में थोड़ा-सा जब भिगो लेते थे, तो it had a very saffron kind of a color। उसमें आप कपड़ा अगर व्हाइट भिगोते हैं, तो इट टेक्स दैट कलर इनसाइड इट। सो ना इस तरह के नेचुरल कलर्स से बच्चों को खेलना कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। यस, पारिजात, राइट। सो और मेकिंग फ्लावर प्रेस आर्ट, फ्लावर्स को प्रेस करके उसके आर्ट वर्क बच्चे कर सकते हैं। दे वुड रियली एंजॉय दिस। आई थिंक हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। नेचर का एक जर्नल बना ले। आई हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम 2026, माय डियर फ्रेंड्स। आई एम नॉट अ प्रो इन दिस, बट आई हैव स्टार्टेड अ बर्डिंग जर्नल दिस ईयर, और मेरे लिए बहुत नया जानरा है। आई विल बी गेटिंग इन टच विथ रेती मैम टू लर्न मोर फ्रॉम द एक्सपर्ट एंड her daughter. Yes, yes, yes. And again, you can encourage children to spend half an hour in nature and then write an essay about it. और ज़रूरी नहीं कि उसको आप कहीं पोस्ट करें। तो ये एक और बुक ऑथर की थी, लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग बुक रही है, एंड एवरीबडी हैज़ एप्रिशिएटेड इट इनक्रेडिबली। ओके, and the first chapter in this book that we are reviewing right now, vitamin N, it has a very sweet metaphor, and that says physician ने आपको ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है। इस प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्शंस, निर्देश कुछ इस प्रकार है: यूज डेली आउटडोर्स इन नेचर, गो ऑन अ नेचर वॉक और वॉच बर्ड्स और ऑब्जर्व ट्रीज, practice respectful outdoor behavior in solitude,
और एन्जॉय इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसको रिफिल करते रहना अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, एंड दिस प्रिस्क्रिप्शन नेवर एक्सपायर्स। तो नेचर का एक प्रिस्क्रिप्शन ऐसा है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता, वो आपको हमेशा सप्लाई में मिले। आज के ज़माने में हमें विटामिन एन क्यों चाहिए? हमने ऑलरेडी किया है ये, पहले भी एनालाइज़। हम बहुत स्क्रीन हेवी लाइव्स लीड कर रहे हैं, इंडोर्स हैं मोस्टली, हमारा अटेंशन एक गोल्डफिश के अटेंशन से भी कम हो चुका है, और बच्चे जो हैं, वो बहुत कम आउटडोर एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं आज के टाइम में। So yes, my dear friends, this was the important term I wanted to talk to you about. You remember NDD की हमने बात करी थी. So this author has coined this term. It's called nature deficit disorder. It's not clinically a term yet, I mean, in the scientific community, but the author vouches for this, and he says nature deficit disorder जो है वो physical, emotional या social cost of growing up disconnected from the nature world. Nature से हम जितना जितना दूर जाते हैं, तो जो सिम्पटम्स होते हैं वो नेचर डेफिशिएंट डिसऑर्डर के रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो नेचर डेफिशिएंट अगर होता है तो अटेंशन फटीग होती है हमारी, वो, और हम इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। हमने पहले भी करी इस बारे में बात। और उनका जो उनके मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये थीम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो नेचर जो है, इट्स नॉट अ प्लेस टू विजिट, आपको कहीं और जाना नहीं है, नेचर इज एक्चुअली होम। यस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट देयर, एंड दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग एक्चुअली। जिन जिन जगहों पे आपको प्रकृति का सानिध्य मिल पा रहा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो अंडररेटेड, हमें रियलाइज नहीं हो रहा। मगर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सुपर टेक्निकल और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, तब फील होता है कि कितना मिसिंग है नेचर हमारी लाइफ में। सो इट्स वाइज टू समटाइम्स लूज द फोन एंड गेट अ बेटर कनेक्शन। एक्चुअली फोन को जब हम छोड़ते हैं तो हमारा कनेक्शन ज्यादा सुधर जाता है। एक कोटेशन आपने पढ़ा होगा, दैट सेड, यू नो, there's no Wi-Fi in the forest, but still there is so much better connection out here, right? So it's a good reflection for you to note, when was the last time you felt at home in nature? And this is a reflection I would really love you to share as we wrap. We're coming towards a close here. मैं आपको कुछ पर्सनल एनेक्डोट्स बताना चाहती हूँ एज वी कम टुवर्ड्स द एंड। When we had moved to Calcutta, so obviously because my grandparents stayed in Rajasthan, my dad always wanted to keep going to हमारे गांव राजस्थान में। हम जाया करते थे काफ़ी फ्रीक्वेंटली। और सिटी में हमें पता ही नहीं होता है कि नाइट स्काई कैसी दिखती है, और सिटी में एक्चुअली कितने लाइट्स ये सब होते हैं, तो नाइट स्काई हमें असल में पता नहीं चल पाती है। तो हम गाँव में थे, और वहाँ पे घर के आँगन के बाहर ना चारपाई डली हुई थी, एंड आई वाज़ अ लिटिल किड, और वहाँ पे मैं बस चारपाई पे बैठी थी या जस्ट लेटे हुए थे, एंड एज़ आई लुक्ड अप इन द स्काई आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड! इतने व्हाइट व्हाइट टिम, 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 टिम करते हुए तारे, पूरा आसमान भरा हुआ था तारों से। मैं जब छोटी थी तो मैंने ये दृश्य पहली बार जब देखा, समथिंग फेल्ट वेरी वेरी मेस्मराइजिंग इनसाइड ऑफ मी, एंड देन माय चाचा एंड एवरीबॉडी दे लाफ्ड एंड दे सेड, अरे बाबूड़ा, यहाँ पे तो ये कॉमन है, यहाँ पे तो दिखता है, यहाँ कहाँ पे, यहाँ तो लाइट ही नहीं है, यहाँ पे तो बस तारे ही तारे दिखेंगे। और पूर्णिमा की रात में हम छत पे जब सोते थे ना गाँव में, कज़िन सब आ जाते थे नानी के घर में, और ब्लैंकेट्स शेयर करके, और ऐसा फ़ील होता था कि चाँदनी भी जो है ना वो अपनी ब्लैंकेट में हमें समेटे हुए है। दैट एक्सपीरियंस इस वाज़ सो रेयर, और वो हम शहर में ट्राई ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि शहर में इतने मच्छर, मस्किटोज़ और इतने सारे अलग टाइप के फ्लाइज़ एटसेट्रा होते थे, यू वुड नॉट इवन फील सेफ ट्राइंग दैट at a time when I was young. If you get to do that or experience that, please enjoy. It's a great blessing. आप उसको savor करिए and be very grateful for that experience. Also, again, I have been very mesmerized when I look at the clouds are moving. इस तरह के कुछ-कुछ experiences बचपन में या अभी भी कभी भी होते हैं, या हम Rumit sir will vouch for this, you know, when you are flying every single day and you get to see the clouds, that's such a mesmerizing feeling, you know. Sometimes when I've traveled on air, I really feel कि हमें लगता है ना कि हम सब कुछ हैं, हम ही दुनिया में सब कुछ ही हैं, सबसे बड़े हैं, हमें सब कुछ पता होता है। When the more we get up there,
हमें फील होता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ सच अ माइटी एग्जिस्टेंस, यू नो, देयर सो मच बियॉन्ड अस दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड and that we might never be able to. So every time I have traveled on the plane, I'm sorry, yeah, every time I've traveled on the plane, it has been nothing short of a mesmerizing journey. Are you with me, friends? Am I audible? I'm not able to actually access my. You are audible. Anything wrong with my screen? My screen has completely blurred. You know, No, it's working. you're It's able to working. see the. Okay, fine. Yes, So a that's. lot of houses are there. Thank you so much. Yeah, so this kind of vision when you are up on the plane और उससे जितना ऊपर चलते जाते हैं, मुझे बहुत मेस्मराइज़ फ़ील होता है ये, उसको मैं कॉग्निटिवली डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मुझे अंदर बहुत ग्राउंडेड फ़ील होता है, बहुत ग्रेटफुल फ़ील होता है, मन में बार-बार आता है कि गॉड्स ग्रेस इज़ सो इनफाइनाइट एंड दिस वर्ल्ड इज़ सो ह्यूज और हमें कुछ भी नहीं पता है इस दुनिया के बारे में और हम बहुत माइटी यूनिवर्स का हिस्सा होते हैं, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो नेचर जो है वो आपका एक नर्वस सिस्टम रेगुलेटर हो सकता नहीं एक्चुअली में है। और यहाँ एक स्ट्रैटेजी हम ट्राई कर सकते हैं कि जब भी हम थोड़े से ओवर स्टिमुलेटेड या डिस्कनेक्टेड या थोड़े से एंग्शियस फ़ील करें, अपने जूते-मोजे उतार करके अपने दोनों फीट को ग्राउंड पे रखें एक्चुअली। चाहे वो घास हो, चाहे वो पानी हो, धरती हो, चाहे वो मिट्टी हो एंड व्हेन वी डू दैट थोड़े ही समय में हमें बहुत ज़्यादा ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी, रूटेडनेस फ़ील हो सकता है। और डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली ये विजुअल्स खुद देख कर के ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या फ़ील होता है। तो ये तो ग्राफ़िक्स हैं डिजिटली। आप एक्चुअली में जब होते हैं आस-पास इस तरह के माहौल में, ऐसे ग्रीन्स में, तो आपको कितना ज़्यादा नरिशिंग फ़ील होता है, राइट? सो विटामिन एन जो है, उसका सेवन हमें रोज़ करना है रेगुलरली। डोज़ेज़ अनलिमिटेड है, जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं, जितने संभावना है। कुछ छोटे-छोटे टैक्टिक्स एज़ वी रैप जो हम ट्राई कर सकते हैं। वन इज़ अ 5 मिनट नोटिसिंग प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट के लिए थोड़ा आउटडोर स्टेप हो जाएँ, चाहे घर के अंदर ही है, बालकनी में चले जाएँ, छत पे चले जाएँ या नीचे चले जाएँ, खिड़की के पास और कोई एक लिविंग बीइंग को नोटिस करने की कोशिश करें। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा, ठीक है? चाहे वो एक बर्ड हो, एक लीफ, क्लाउड, एंट, ब्रीज़, कोई भी एक लिविंग एंटिटी जो है, उसको आप एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। इसको आपको कुछ नेम देने की ज़रूरत नहीं है, जर्नल करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी फ़ोटोग्राफ लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नीड टू एक्सपीरियंस दिस। आई थिंक हम बहुत कुछ जर्नल कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, लॉग कर रहे हैं। हमें कुछ वो अनलॉग करने की ज़रूरत है ऐसे एक्सपीरियंसेस, ठीक है? और एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं कि एवरी वीक हम चूज़ कर सकते हैं कि मैं एवरी डे कोई एक एस्पेक्ट ऑफ नेचर के साथ ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी करने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई एक बर्ड देखूँगा या ट्री या पैच ऑफ स्काई। अगर आप स्पिरिचुअली इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने पंच तत्वों के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि मैं एवरी वीक वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पंच तत्वास के साथ अपना कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रेंथन करूँगा। जैसे ग्राउंडेडनेस धरती के साथ तो मैं बेयरफुट धरती पे वॉक करने की कोशिश करूँगा या स्काई है तो मैं आसमान में देखूँगा। अग्नि है अगर तो दिया आप लाइट कर सकते हैं या सनराइज़ या सनसेट को विज़िट कर सकते हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम अपने लाइफ में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड एज़ आई रैप दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड फॉर हियर इट्स अ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ थिंक अबाउट दिस। Where has nature quietly disappeared from me in my everyday routines? एंड वेयर कुड इट बी फाउंड, अगर मैं दोबारा जाऊं अपने कनेक्शन को नेचर से एस्टैब्लिश करने में, मुझे कहाँ मिल सकेगा, वो कहाँ मिल जाएगा? अर्बन लाइफ में मैं कैसे कनेक्टेड रह सकती हूँ नेचर से? ऐसा क्या एक तरीका है जिससे मैं मोर नेचर इन माई लाइफ इन्वाइट कर सकती हूँ विदाउट without any effort or pressure? I'm sorry, that's a typo error here. And with this, my dear friends, I thank all of you for being here with me in exploring and learning this journey about this book. It's called Vitamin N. इसमें literally
एवरी पेज हैज गॉट सम स्ट्रैटेजीज, और ऑथर ने लेक्चर बिल्कुल नहीं दिया है। ऑथर ने छोटे छोटे पॉइंटर्स में बस आपको मेंशन करके छोड़ दिया है। ये बुक आपको बिल्कुल भी टू मच लोडेड विद ज्ञान फील नहीं होगी। एट द सेम टाइम इट इज गिविंग यू सो मच, और ये आपको कॉग्निटिवली आपको एंगेज करने के लिए बिल्कुल इनवाइट नहीं करेगी। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इस बुक में किसी भी तरह के कोई लॉजिक नहीं है। ये बुक टेक्नोलॉजी वर्सेस नेचर के डिबेट में नहीं एंगेज कर रहा है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अ लॉट ऑफ अस, हम कई बार डाइकोटोमी के रूप में देखते हैं कि अगर आप ये चूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये रिजेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आप इसके साथ होते हुए भी इसके साथ इसको आत्मसात कर सकते हो। जीवन में बैलेंस लाया जा सकता है। हम शहर में रह करके भी प्रकृति के सानिध्य की कामना कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं उसको अपने जीवन में शामिल करने की। So, if I vouch for nature more and more, it does not make me anti technology at all. Or if I vouch for technology more, it does not make me anti nature. That's the stance of the author. वो blogs कर रहे हैं, podcast कर रहे हैं, website बना रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करें। इनफैक्ट इस टॉक के बारे में आप सबसे मैं शेयर भी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही कर पा रही हूँ। राइट, आप सबसे कनेक्ट भी इसी के द्वारा कर पा रही हूँ। सो डू नॉट अलाउ योर माइंड टू allow you to just cognitively limit yourself into any one aspect, really please। ज्यादा से ज्यादा एनालॉग लाइफ हमें embrace करना है, तो थोड़ा सा दिमाग का साथ छोड़ करके थोड़ा सा अपने बीइंग स्थूल शरीर में, थोड़े से हमारे आत्मीयता में, हमारे इमोशंस में थोड़ा ज्यादा हमें प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए, और इस सेशन को अपने प्रेजेंस से इतना लविंग और ब्यूटीफुल और वर्थवाइल बनाने के लिए। मेरी सैटरडे शाम को आप सभी ने अपनी मौजूदगी से इतना ज्यादा एनरिच किया, इतनी मिठास भर दी है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू माय बिलवेड फ्रेंड्स। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। आपको कुछ भी शेयर करना है यदि, सो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सेल्फी, यस, थैंक यू। हाँ, रेती मैम, शेर सिंह सर, प्लीज इट्स योर टाइम नाउ। Thank you very much, Ajay. Such a simple and authentic session. Yes. Ready everyone for selfie? I think all are ready. That's what she was saying. Sher Singh, you're supposed to be clicking the pics. Yes. Ready? Smile. I think today is the Women's Day. Today is the Women's Day. It is every day, Sher Singh ji. Rumit is also present. Sanjay is also present. So it's both. Rumi sir is wearing the vitamin and he is wearing green. Rumi sir always set example. Yes, thank you. Thank you, Richaji. Very, very wonderful, simple and authentic. What I can understand and whatever you said from your own experience and heart. So I just got flow in that. Even I just returned from the office now, but as I know that you are giving the session, so very wonderful. Just I want to share that how I just since I am in Kerala, so that we are access in nature because here lots of jungle and since May to November there is a continuous rain. So, but yes, how I invite nature in my room that I do not use AC under air condition, whatever the temperature may be, and I always keep my windows and door open so that the cross ventilation, the nature is always entering and coming and out. And during my office time, if I always I have placed my book near the window, so every 1 hour or 2 hour I just read. Like I have that book stand, the book is always there, so I take 2-3 minutes break, read some page and just look outside in the nature. This is how I'm just inculcating nature in my day-to-day life. So thank you.
Yes. So, recently I attended an expressive art therapy session, and the faculty, the facilitator asked to create something which makes you feel, the best memory or something that really comes up to your mind and makes you feel very good. So I don't know, but subconsciously, I actually drew all the elements of nature. There was a color of the sky, there was a color of the trees, the color of the mud, the color of the mud, water. So I actually realized. So when I shared my drawing with her, and I'm not an artist at all, but I what drew inside from inside me was that is what actually happens. The moment you see the sky, you have an eternal strength. The moment you are walking barefoot on the grass or the mud, you suck up strength from the dharti below you. Or and that is that because this vastness of these elements, this is what is inside us, and we have to go back to them. We should be going back to them. But Richard, thank you for drawing me into this session. And I stay in an area which is very congested, so we actually have to plan out to move out. But this is actually the time to move out and be in the nature, with lot of flower festivals and these festivals coming up now, Feb March, and lot of gardens opening up in Delhi. So thank you for sharing this. So I think with your this thing, your book review, I'll be able to extract the maximum in the coming 2-3 months when it is very accessible to go out. Thank you. Yes, Rumit sir. Yeah, thank you, Richa ji. As we know, and I think most of our members also know that she can, make sounds of lot of birds and animals being close to nature. And you can't if you are not, aware, then you can't make it that it is, voice made by her. You will feel like it is original. So thank you for that. And of course, this was very much needed. This kind of different topic we had in TBF, and the Mother Nature is always giving us lot of things. And I always love because that is the most precious thing to be with the Mother Nature. And I cherish my trips to Hiroshima cherry blossom time, which is supposed to be ideal. So 2 times I had been there, Tokyo and Hiroshima. Amazing environment and weather, and also at Switzerland, Mount Titlis. There, I wonder how I was not wearing the jacket. Just I wanted to embrace the ice there. Now it is not possible. Even in Delhi, we had to wear jacket, but that time I don't know. So I still cherish, and in India, our country also, lot of places are there. So like Isha Center, if you go, you enjoy staying there. Peacock moving and cow. You can actually see the smile on the face of the cow there. Means amazing. This you feel like you are in heaven. They don't allow vehicles in the premises. Bullock cart moving, and all that is like a dream. So I compliment them also for maintaining all these things. And also recently, I thank my company. We had one management training program in Pondicherry where this Pigos is concerned. They conducted the minimal infrastructure, so only mats for sleeping, no geyser, nothing. So literally, we were shouting when we were taking bath, and people were saying, "Ki, what is this?" So I said, "We are creating the heat, na, by shouting." And so that was amazing experience. So we should experience such different things, and I've seen and read across many places that we should explore new locations, new activities, new things. So otherwise, same monotonous place, same monotonous rusting will be there. So that's why it is very much necessary, and I find myself very lucky to be in the profession where I am constantly traveling. और एक कहावत है कि भ्रमण हटाए भ्रम. So भ्रमण जो है वो
it is necessary. So that's why, and of course, there are always updates from a lot of our TVF celebrities. They are connected to nature. So it is very much encouraging, and thank you very much. Thank you for the wonderful session. Thank you. Thank you, sir. It's an honor to have you among the audience. Yes, Riti ma'am. Thank you, Richa, for that lovely review. And it just brought to mind, like you said, that those who have kids at home, they should do this. It's for me, it's like I've been there and done that. And as a result, my daughter is, you can say she's an ecologist, ornithologist, and she does a lot of things regarding birds. And during those days, when she was young, we used to go to all these sanctuaries, the bird sanctuaries, and she would be taking a camera and all that with her and shooting pictures. And so she got introduced to nature pretty early in life, ever since she was a toddler. And of course it shows now. So now she teaches me what I should do and shouldn't do, because I'm having a couple of birds that are coming into my house to build a nest. So she says, don't allow that, don't feed them, take a broom and shoo them out, they should be in the wild. So, and then I have one snake and a green tree lizard. And yeah, I've given them names, and they pop in once in a while, not inside the house but outside. I can get to see them. So I've instructed all the people, these neighbors in the colony, like, that told them, please don't kill the snake, this particular snake, let him move around, he is harmless. So yes, and I feel that, to get more in touch with nature, one thing that we can do is just watering a plant itself is, connects you to nature. So this is what I do early in the morning and in the evening also. I take my watering can and water all the plants, and then sit and pluck all these, and not pluck, in fact pick up all the parijat flowers. We have Sher Singh has seen the parijat tree over here at my place. So it's in bloom now. It's very few flowers are coming in now, but earlier it used to be in full bloom. So I pluck these hibiscus, parijat, the blue pea flower. So I'm always in nature. Like, I mean, because we are in Kerala, so we are blessed with that. So yeah, thank you so much, Richa. It was lovely listening to you. Wonderful, actually. Thank you for sharing, Riti ji. And I have noticed, Richa, these all the book reviews are so grounded, uh, constantly reminding us towards groundedness, towards nature, कि slow down होइए और nature से जुड़िए. And this is such a beautiful reminder, I must say. And all of us are trying to practice sattvic values, but this book review was so simple, and the I would say जो practices उसमें हैं, they are very easy to we can implement. Like hugging the trees है हमारे पास. You can go in the garden, in the park and hug them. It's very, very easy to do. So thank you so much, Richadi. And one more thing, this book review can be taken as an example for all of you. Those who are planning to give book reviews in the future, this could be the timing, the format, the way. And yes, because of one great member, thanks to her, she gave us few feedbacks on the book review and how improve that. And Richadi and I am trying to incorporate all those things in that. So yes, wonderful book review, Richadi. Thank you so much. And for tomorrow, we'll be having the session by Rumit ji, focus on what matters, at 7 a.m. So yes, we can meet tomorrow. And all the gratitude and all the thoughts, यस सब आएंगे कल सुबह. एंड आपके सबके विचार प्लीज ग्रुप पे डालिए. पे योर ग्रैटिट्यूड टू रिचा दी इन द ग्रुप. वी वुड लव दैट. सो यस, आई थिंक विद दैट वी कैन वाइंड अप द सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. इट वाज वंडरफुल. थैंक यू सो मच रिचा दी, एज ऑलवेज. बहुत ही ब्यूटीफुल बुक रिव्यू. गुड नाइट एवरीवन. लेट्स मीट टुमारो एट 7.